हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पार्ट 2 एक्सरसाइजेज एंड सॉल्यूशंस में बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 6th हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम मल्टीपल एक्सरसाइजेज करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। पर उसके पहले मैं ये चाहूंगा कि आप एक पेन और कॉपी के साथ रेडी रहें। जो भी एक्सरसाइज आपके सामने आती है आप वीडियो को पॉज करें, उसके आंसर्स को, सॉल्यूशंस को लिखें, और जब मैं आपको उसके आंसर्स या सॉल्यूशंस बताता हूं तो आप उसको चेक करें कि क्या वो सही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके चैप्टर के ऊपर बेस्ड हैं। आपको सिंपली ये करना है कि राइट आंसर्स के साथ इनको मैच करना है। तो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है नर्मदा वैली। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ा कि नर्मदा वैली वो जगह थी, वो रीजन था हमारे देश का जहां हंटिंग और गैदरिंग होती थी। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट मैच है हंटिंग एंड गैदरिंग। हमारा सेकंड पॉइंट है मगध। मगध was one of the or Magad was the first big kingdom in a country. आपका थर्ड है गैरो हिल्स। गैरो हिल्स वो जगह थी जहां सबसे पहले हमारे देश में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। A fourth is Indus and its tributaries. हमारे देश में सबसे पहले इंदस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारों पर सिटीज डेवलप्ड हुई। और फिफ्थ वन इज गंगा वैली। गंगा वैली वो जगह है, गंगा वैली और उसके ट्रिब्यूटरीज में, जहां पे करीब 2500 साल पहले प्रारंभिक नगर बसने चालू हुए। सिटीज स्टार्टेड ग्रोइंग अबाउट 2500 years ago. ये है हमारे सॉल्यूशंस। आइए हम इनको चेक करते हैं। तो ये हैं हमारे सॉल्यूशंस। नर्मदा वैली, हंटिंग एंड गैदरिंग। मगध, द फर्स्ट बिग किंगडम। गैरो हिल्स, अर्ली एग्रीकल्चर। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द फर्स्ट सिटीज। गंगा वैली, cities about 2500 years ago. So now let's move on to our next exercise. Make a list of as the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stones? आपको एक लिस्ट बनाना है उन ऑब्जेक्ट्स की जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, और इनमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्टोन से बने होते हैं। So now you can pause the video and you can write down your answer in your copy. A list of all objects that archaeologists may find is as follows. Remains of building, जो भवन हैं पुराने समय में जो बनाए जाते थे उनके अवशेष उनको मिलते हैं। पेंटिंग्स मिलती हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं कई तरह के जो हड्डियों से बने होते हैं और पत्थरों से भी। पॉट्स मिलते हैं, पेन्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, बोन्स ऑफ एनिमल्स मिलते हैं और कॉइन्स मिलते हैं। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टोन से बनी होती हैं? तो स्टोन से बनी हुई चीजें होती हैं टूल्स, वेपन्स, और कुछ हद तक ऑर्नामेंट्स में भी स्टोन का यूज किया जाता था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड women did not generally keep records of what they did? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो पुराने समय में, प्राचीन काल में जो सामान्य मनुष्य हुए, महिलाएं और पुरुष, वो उनके रिकॉर्ड्स नहीं रख पाते थे जो उन्होंने किया? तो हमारा आंसर है वी थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड women did not generally keep records of what they did due to the following reasons. The first one is they did not know the art of writing in the beginning. उनमें से कई लोगों को तो लिखना ही नहीं आता था शुरुआत में। Even some of them were not literate
even after the knowledge of the script. स्क्रिप्ट का नॉलेज होने के बाद भी उनमें से काफी लोग असाक्षर थे, इलिटरेट थे. थर्ड इज दे वर नॉट हैविंग एन इंटरेस्ट इन सच वर्क्स. उन्हें इस तरह के कामों में कोई रुचि नहीं थी. एक्चुअली वो लोग बहुत ऑर्डिनरी लोग थे और वो अपने जीवन यापन में लाइवलीहुड में ही बिजी रहते थे. And the fourth one is they did not know the importance of keeping records of the events. The lack of historical sense was mainly responsible for it. इस तरह के इवेंट्स को रिकॉर्ड रखने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हजारों साल बाद या 1000-2000 साल बाद लोग उनके रिकॉर्ड्स को देखें. वो सिंपली ऑक्यूपाइड रहते थे उनके लाइवलीहुड में, उनके जीवन यापन में. थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब at least two ways in which you think the lives of kings would have been different from those farmers. आप दो ऐसी बातें बताइए जिनसे आपको लगता है कि जो राजा लोग होते थे उनका जीवन अलग था किसानों से. इसका आंसर है द किंग्स used to live in palaces or big houses. The farmers used to live in huts or in very small houses. जो राजा हैं वो बड़े महलों में रहते थे, बड़े घरों में रहते थे, और जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो साधारण घरों में या छोटी कच्चे मकानों में रहते थे. The kings were dependent for their food on farmers. जो राजा हैं वो उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए फार्मर्स पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि फार्मर्स ही अनाज को प्रोड्यूस करते थे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी. फार्मर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड अदर पीपल आल्सो. द किंग्स वोर शोई एंड कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स. जो राजा हैं वो लग्जरियस लाइफ जीते थे, बड़े महंगे और दिखावटी कपड़े और ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जबकि फार्मर्स जो हैं फार्मर्स वोर सिंपल एंड वेरी चीप क्लॉथ्स. फार्मर्स सस्ते और बड़े साधारण कपड़े पहनते थे. नाउ वी विल गो थ्रू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. गेट रेडी विथ योर पेन एंड कॉपी. द फर्स्ट वन इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड आर कॉल्ड. जो लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे उन्हें कहा जाता था, आपके ऑप्शंस हैं हंटर्स, B skilled gatherers, C farmers and D merchants. तो उन्हें कहा जाता था skilled gatherers. Second, the places where rice was first grown are located in. Your options are A, north of the Vindhyas, B, Suleiman Hills, C, on the banks of the Ganga, D, the Garo Hills. And the answer is A, north of the Vindhyas. Now, third question is dash was not used in the old books. And your options are A, Prakrit, B, Hindi, C, Sanskrit, D, Tamil. And the answer is A, Hindi. Fourth is the kingdom of Magad was located dash. And your options are on the banks of the Indus, B, in the south of the Vindhyas, C, in the area along Ganga's tributaries in the south of Ganga, and D, in the Garo Hills region. And your answer is C, in the area along Ganga's tributaries in the south of Ganga. Now we are going through some exercises based on fill in the blanks. Our first exercise is men and women moved in search of dash and to escape from dash. And your answer is men and women moved in search of livelihood and to escape from natural disaster. Second sentence is the name India was given by the Iranians and the Greeks. Third,
The bark of the birch tree was used to prepare, and your answer is manuscript. Fourth, inscriptions were written on hard surfaces like, and answer is metals and stones. And your fifth sentence is traveling from one place to another led to, and your answer is sharing of ideas. Now we will go through some short answers type questions. I'll show you a question and then we will discuss on answer. Now we will go through some short answers type questions. I will show you a question and then we will discuss on the answer. The first question is, where are the Suleiman and Kirthar hills located? आज के समय में सुलेमान और किरथार हिल्स कहां स्थित हैं? और आपका आंसर है द सुलेमान एंड किरथार हिल्स आर लोकेटेड इन द मॉडर्न डे पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी टू एनिमल्स which the people of the सुलेमान एंड किरथार हिल्स reared. आपको दो ऐसे पशुओं के नाम लिखने हैं जिन्हें सुलेमान और किरथार हिल्स के लोग पालते थे. और आपका आंसर है शीप एंड गोट. इसके अलावा वो लोग कैटल्स को भी पालते थे. थर्ड इज, वेयर आर द गैरो हिल्स लोकेटेड? एंड द आंसर इज the Garo hills are in the northeast of India. Your fourth is, what are tributaries? This is something very important question. And the answer is, tributaries are smaller river that flows into a big river. Tributaries क्या होती हैं? छोटी नदियां होती हैं, सहायक नदियां होती हैं जो जाकर बड़ी नदियों में मिल जाती हैं और उसे और बड़ा बना देती हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा. एंड द आंसर इज सोन. सोन नदी के अलावा यमुना इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज मगध लोकेटेड? And the answer is, Magad was located in the south of the Ganga. So now let's move on to our next question. Why was Magad famous? And the answer is, Magad was famous because its rulers were very powerful who established a big kingdom. मगध इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसके जो शासक थे वे बेहद शक्तिशाली थे जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की. Our next question is, what was the job of religious teachers? And the answer is, religious teachers moved from one place to another to offer instruction and advice to the people who met on the way. जो धार्मिक टीचर थे, शिक्षक थे, ये गांव-गांव घुमा करते थे और लोगों को सलाह दिया करते थे. From where does the word India come? And the answer is, the word India comes from the Indus, known as Sindhu in Sanskrit. इंडिया जो वर्ड है ये इंदस रिवर से आया है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. Our next question is, what is meant by the manuscript? And the answer is, manuscript is a handwritten matter. Our next question is, what was used in ancient times to write manuscripts? And the answer is, palm leaf or the bark of the birch tree was used in ancient times to write manuscripts. भोजपत्रों का इस्तेमाल किया जाता था
प्राचीन काल में मनुस्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए। What are inscriptions? And the answer is inscriptions are writing on relatively hard surfaces like stone or metal. Next question is what languages were used for writing manuscripts? And the answer is Sanskrit, Prakrit, and Tamil languages were used for writing manuscripts. Our next question is why do archaeologists look for bones of animals, birds, and fish? And the answer is they do so in order to find out what people ate in the past. Our next question is what are the occupations of the people of the Andaman Islands? And the answer is the people of the Andaman Islands are engaged in fishing, hunting, and collecting forest produce. Our next question is name two words we often use for our country. And the answer is two of the words we often use for our country are India and Bharat. Our next question is what do scripts consist of? And the answer is scripts consist of letters or signs. Our next question is where is Rosetta town located? And the answer is in Egypt. Our next question is where was the inscribed stone found? And the answer is inscribed stone was found in Rosetta, a town on north coast of Egypt. Our next question is in which languages and scripts were inscriptions written on inscribed stone which was found in Rosetta? And the answer is Greek and two forms of Egyptian language. So, well, it was all about our chapter number 1 from class 6th history. Please subscribe AARAMBH app channel on YouTube to attend live doubt clearing classes by master teachers on all subjects. Thank you very much.